हाय गाइस, वेलकम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है डे 2 हमारा पोर्ट पेरी में। कल रात को बहुत बारिश हुई थी। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा अच्छे से नींद नहीं आ पाई बिकॉज़ ये जो अपार्टमेंट्स हैं दे आर वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर एंड देयर वाज अ बिट ऑफ डिस्टर्बेंस। तो बट nonetheless we had to wake up early because हमें यहाँ से निकलना है मूंटा बे के लिए which is around 1.5 hour. I am almost ready. बस कुछ बिट्स रेडी हैं, कुछ बिट्स रहते हैं यू नो ऑफ माई आउटफिट एज पर द वेदर। तो यहाँ बिल्कुल बहुत ही कंफर्टेबल आउटफिट्स पहनेंगे और निकल चलेंगे और आप लोगों को साथ लेके चलेंगे। एंड येस, इफ़ यू स्टिल हैवंट सब्सक्राइब प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड थैंक यू इफ़ यू ऑलरेडी हैव। ऑल्सो अगर कोई फीडबैक आप लोगों के पास हो जो आप चाहते हैं मैं इनकॉर्पोरेट करूँ अपने ब्लॉग्स में, आई एम हैप्पी to take it. And now let's get started. So before heading out, let me show you guys the weather today. It is still very cloudy, looks like it's gonna rain anytime soon again. And now let me show you guys my outfit of the day. तो आउटफिट ऑफ द डे में पहनी है डेनिम जीन्स और द सेम शूज़ फ्रॉम येस्टरडे। ये हाफ जैकेट जो कि है H&M से, और ये येलो कलर की बहुत ही ब्राइट सी टी शर्ट और मेरे स्टैंडर्ड हुप्स। एंड आई थिंक आई एम ऑल सेट टू kill the day. What do you guys think? How do you guys like my outfit? Let me know in the comments. And yeah, do you think this is more comfortable and appropriate as per the weather? हो गया. Good morning. Good morning. Now we are leaving. See you in some time. Buddy. 1 hour 12 minutes to the Cornish pastry. Pastry? Yeah, No. bakery. So we're going to Cornish Kitchen, which is pretty known for its. Sheep. Oh, look at the sun! It's coming out. Yeah, playing hide and seek today. Getting covered by clouds. We didn't really see this landscape उस दिन जब हम आए थे, क्योंकि रात को अंधेरा था। कितना प्यारा लग रहा है ये। So pretty. वाला ऐसा लग रहा है वाला बेबी। तो वन थिंग जो बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है व्हेन यू आर ड्राइविंग स्पेशली ऑन द कंट्री रोड्स इन ऑस्ट्रेलिया इज दैट अ कैंगरू या एनी एनिमल कैन, primarily kangaroos, they can just jump out of nowhere on the main road, and then you have to take a call on either hitting it or just try breaking up, but it is a very tough call और बहुत मुश्किल होता है। and देखिए ये जनाब अपनी बोट को साथ ही लेके चल रहे हैं, वो बिल्कुल तैयार है, लगा रखी है, ये वो लेके रेडी है। जाएंगे। वो बोट को भी लोड कर रहे हैं। छोटी सी बोट है उनके पास। मिलिए आज के अपने होस्ट से। मैं हूँ कदीना और ये है और हम आज आपको दिखाएंगे मूंटा बे, वालरू और कदीना मे बी। और कोस्टल में शुरू हो गया है, तो अब हम पानी के बहुत पास। राइट साइड पे जैसे कि आप मैप पे भी देख सकते हैं, हम पानी के तलव में चल रहे हैं। आपको हम मैप भी, as you can see, yes, 44 minutes left to our destination. ये आप मेरी एक्टिंग कर या अपनी फ्यूचर की एक्टिंग कर रहे हो? No worries की एक्टिंग कर रहा है वो, no worries की। No worries की, no worries अपना क्रूज कंट्रोल टेस्ट कर रहा है।
हो गया टेस्ट. It also says that we have Moonta Bay and Port Hughes. यहाँ से आपको राइट लेना है. Oh, so cute. The cute. Oh my God. I think so. That's how it looked. Maybe in the picture. Yeah. Yeah. This place definitely smells of. See, try famous homemade Cornish pasty and relish. Ooh. Yummy. What would you like to try? Wow, you got so many. So I'm having a vegetable pasty and sandwich is that for having here? and Ashish is having Cornish pasty and a chocolate mud cake and coffees that we've ordered. You like the flavors? Yes. Good. Let me try my pasty now. चॉकलेट मड केक बहुत अच्छा है. लोकेशन पे ना बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए और दम के बर्न करना चाहिए, बट खाने से अपने आप को रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि दिन रोज़ दिन में हम हर दिन तो नहीं खाते ना ये सब. तो जब खाओ मज़े करो, एंजॉय करो, पर उनको बर्न भी करो. डी का ज्ञान सवेरे सवेरे. So the breakfast was nice, decent. It was the Cornish kitchen, and definitely known for homemade Cornish pasties. Now enjoying our coffees and light strolling around this place just to explore the little shops, very cute shops. So yeah, let's get going. Amanda gifts and crystals. Really liked these two. Cuties. And then you have Cafe Moonta. Nice. Cute. Look, so cute. Hi. Wow. They're very broad. Heritage trail. 16 किलोमीटर की हेरिटेज ट्रेल है भाई ये. Look at the bark of these trees. Wow. This is definitely remarkable. Wow. And even that tree. Beautiful. अब हम जा रही हैं Moonta Mines tourist trail. जगह है अंदर. डूडू ने किया है स्मार्ट वाला काम. डूडू ने किया ना. नहीं, बूबू ने किया है. क्योंकि मैंने टिकट पहले ही बुक कर दी थी और ये सोल्ड आउट है अब यहाँ पे. डूडू छोटे मोटे टिकट्स बुक नहीं करता है. डूडू ने बड़ी वाली जर्नी बुक की जब 2.5 घंटे की है. देखा, बट छोटी वाली टिकट्स भी इम्पोर्टेंट होती हैं. अब ये बुक करना होता है. नहीं तो अभी हमारा टाइम वेस्ट हो जाता, हम वापस चले जाते. ब्लैकस्मिथ तो देखते थोड़ी सी ब्लैकस्मिथ. अब हम वेट कर रहे हैं अपनी बोर्डिंग की. आई एम ऑल एक्साइटेड एंड वेटिंग फॉर द ट्रेन एंड वेटिंग. Here comes our train. Ta-da! Ta-da!
फिर बात करेंगे। आज हम काम वर्जिश करके कम कर लेंगे। This trip will take about 45 minutes to 50 minutes. We stopped twice. First time we stopped, you stay seated on the where you are, and they'll give you stuff over the PA system. Then we'll go from there down. Hello everyone, welcome aboard. As we go around, I'll tell you a little about the discovery of copper here and the history of the mine and of Moonta. These were some of the largest and richest copper mines in the world. better feel कर रहा है. I see dead people. Slow हो गया. वापस आ गए हैं और हमारी कुकिंग हो रही है. We're making lamb. We're making some lamb, frozen lamb, and then We've got some wine as well that Ashish has got, and that is prep for my chole, and now he is prepping some marination for tomorrow, and I am making some rice, and I will show you guys when my cholas are made. मेरा मसाला बन रहा है छोलों का. राइस मेरे रेडी हैं. अभी ये और थोड़ा सा कुक होगा और फिर हम मिक्स कर देंगे. तो हमारे चने चावल आर रेडी, and that is Ash having and now we are gonna enjoy a movie, Ticket to Paradise. See you all tomorrow. Bye, take care and have a good night.